Yes, all our respected viewers, all the examinees and candidates of the competitive examinations of government jobs, आपण मानंकु समस्तंकु आपणकर फेवरेट चैनल एकेडमिक चैनल केसीपी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पार्ट 128 को आमे सादरे निमंत्रण जणाउछु वेलकम करूछु. We are also today on the same topic. The topic is translations. We are on the translations. How to translate an Odia passage into accurate English. Okay. Various types of almost all the competitive examinations ask such type of questions. Short passage of 6, 7 or 8 sentences will come to your examination script and it will ask you to translate this English passage into Odia. Okay. Yes, let us start our lesson. आज जो पैसेज निया जाइछि एई पैसेज बा अनुच्छेदटी आपनकर आईबिस पक्षी संबंध रे जानि चंते ओडे आईबिस नामक ओडे पक्षी अछि. दिस पैसेज इज अबाउट IBIS bird. Okay, let us start our lesson. IBIS पक्षी रो लंबा बेक, लंबा गोड़ और लंबा बंका थंट थाए. Sentence lekha jayni. The sentence answers Odia is not written on the whiteboard, so you have to listen it carefully. मने रखंतु ट्रांसलेट करिबा पई अटेम्प्ट नियंतु किंति ट्रांसलेशंस गुडा क होछि. ओके. आईबिस पक्षी रो लंबा बेक, लंबा गोड़ ओ लंबा लंबा बंका थंट थाए. लंबा बंका थंट को कर्व बीक कहा जाए. ओके. सो आईबिस इज ए बर्ड विथ लगाइबे जगह विथ लगाइ न लगाइले आपनकर हेबो नाही. IBIS is a bird with long neck, long legs and long curved beak. Okay. IBIS पक्षी अफ्रीका, सुदान, इथियोपिया, सोमालिया और येमेन आदि देश में बहुल भाव में देखा जाती. Yes, repeat the sentence. Listen again. IBIS पक्षी अफ्रीका, सुदान, इथियोपिया, सोमालिया और येमेन आदि देश रे बहुल भाव में देखा जाती. बहुल भाव में देखा जाती इन इंग्लिश largely found. Okay. Yes, the sentence in English will be the IBIS is largely found. देखो जगह रे अछि largely found in Africa, Sudan, Ethiopia, Somalia and Yemen. Okay. एही पक्षी उष्ण जलवायु रे रहिबा को भल पाए. एही पक्षी उष्ण जलवायु रे रहिबा को भल पाए. This bird likes living in warm climate. मन रखंतु likes to live लगेबे नाही, likes परे living आसीबो. ओके. उष्ण जलवायु ट्रॉपिकल क्लाइमेट बा वार्म क्लाइमेट. ओके. एहार मुंड रे पर न थाए. माने एई पक्षीर मुंड रे पर न थाए. इट हैज ए featherless head. आपण कहि पारंती इट हैज नो feathers on its head भी कहा जाई पारे. ओके. तापरे नेक्स्ट सेंटेंस. तेणु यहाकू नॉर्दर्न बर्ड पक्षी मध्य कहा जाए. तेणु यहाकू नॉर्दर्न बर्ड पक्षी मध्य कहा जाए. ओके. यस. सो इट इज आल्सो कॉल्ड कहा जाए. इट इज आल्सो कॉल्ड द नॉर्दर्न बर्ड बर्ड. ओके. सेंटेंस नंबर 6 पैसेज रो उक्त देश गुड़िकर पथुरिया ओ मरुभूमि स्थान मानकरे एमाने वास करंती. उक्त देश गुड़िक पथुरिया ओ मरुभूमि स्थान रे एमाने वास करंती. ओके. यस. इट लिव्स especially in rocky and desert lands. देखो पथुरिया एवं मरुभूमि स्थान रॉकी एंड डेजर्ट लैंड्स ऑफ एबव कंट्रीज. ओके. आईबिस एक विशाल आकृतिर पक्षी. आईबिस
एक विशाल आकृतिर पक्षी. In English, ibis is a large bird in shape and size. केबे भी आपण बिग बर्ड लिखिबे नाही, बिग बर्ड लिखिले भूल हो जिवो. ibis is a large bird in shape and size. ओके, यार लंब प्राय 70 रु 80 सेंटीमीटर. यार लंब माने आइबिस पक्षीर लंब प्राय 70 रु 80 सेंटीमीटर. It has a total length. It has a total length of 70 to 80 centimeter. Okay. Ibis निज डेणा को 120 रु 135 सेंटीमीटर पर्यंत प्रसारित करि पारे. आइबिस निजर डेणा को 120 रु 135 सेंटीमीटर पर्यंत माने प्रसारित करि पारे. ओके. In English, प्रसारित करि पारे कोन? It can stretch its wing wide straight wide प्रसारित करि पारे. Ibis can stretch its wings wide up to 120 to 135 centimeter or cm. Okay. एही पक्षी कीट पतंग पोक जोक फलमूल आदि खाई बंचे. यस, एही पक्षी कीट पतंग पोक जोक और फलमूल आदि खाई बंचे. यस, इट फीड्स ऑन insects, worms and wild fruits. खाई बंचे feeds on. Okay. अब कीट पतंग insect पोक जोक worms आउ फलमूल एटा wild fruits बनरे मिलुथिबा फल गुडी को खाई बंचे. Yes, the complete sentence is sentence number 10. It feeds on insects, worms and wild fruits. Okay. एही पक्षी बारंबार स्थान बदलाई रहे, माने गोटे स्थान रे रहे नाही. आइबिस पक्षी एही पक्षी बारंबार स्थान बदलाई रहे. स्थान बदलाइबा कोन? माइग्रेट्स. माने गोटे पक्षी स्थान बदलाइबा माइग्रेट. That means this bird migrates frequently. Okay, आमे कहि परिबा this bird. That means it is a migratory bird कहले भी होउची. बारंबार स्थान बदलाई रहे. It is a migratory bird. Yes, एही परि भाबरे आपण प्रैक्टिस करिवे. Include translations with your preparations. Yes, to take your competitive examinations, you must prepare this type of short passage and the accurate translations of the passage into English. Okay? Yes. Again, we are coming back to you with fresh question and answer. Keep on watching our lessons. Thank you for watching our academic channel KCP Competitive English Part 128.